व्हाट इज द लेक्चर टुडे बेटा? इन लेक्चर 3 में हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड टाइप ऑफ योर मॉड्यूली, दैट इज बल्क मॉडुलस. Bulk modulus is represented by letter K बेटा. Bulk modulus is equals to bulk stress divided by bulk strain. Bulk stress कैसे लिखते हो बेटा अपन? फोर्स बाय एरिया. बल्क स्ट्रेन कैसे लिखते हैं? चेंज इन वॉल्यूम बाय योर ओरिजिनल वॉल्यूम. माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो सिंप्लीफाई करें तो क्या आ रहा है? K is equals to minus of delta P into V divided by delta V. और else change in pressure कैसे लिख सकते हैं उसके अंदर? delta P is equals to your K into your minus of delta V by V. ऐसे भी लिख सकते हो. Pressure is equals to your K into minus of your delta V divided by your V part equation. Pressure कैसे लिखते हो बेटा? How do you write the pressure? P is equals to your H rho into G. It is H, density of liquid into your G is equals to your K into your minus of delta V divided by V. ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है. So delta V by V कैसा होता है बेटा? Delta V by your V is nothing but equal to your V2 minus of V1 divided by your V1. Isn't it? So mass कैसे लिखते हो बेटा? Mass is equals to volume into your density of your solid. यानी डेंसिटी ऑफ योर सॉलिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर वॉल्यूम, क्योंकि मास ऑफ द लिक्विड तो सेम ही रहेगा, isn't it? So I can write here right now from this one, minus of delta V by your V is equals to your delta of your solid divided by your delta of solid part. यानी वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. Delta V by V is equals to your change in the density of the solid divided by density of your solid part. Clear है सभी को? Is it clear? Yes. चलो फिर से एक बार देख लो, कुछ करना नहीं है इसके अंदर, अपने को बेसिक फॉर्मूला याद रखना है. व्हाट इज आवर बेसिक फॉर्मूला? K is equals to bulk modulus. Bulk modulus is equals to bulk stress divided by bulk strain. बल्क स्ट्रेस कैसे लिखते हो? फोर्स बाय एरिया. बल्क स्ट्रेन कैसे लिखते हो? चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. इतना भी फॉर्मूला याद रख लेना, दैट्स मोर देन इनफ फॉर अस. ठीक है. चलो नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ योर मॉड्यूली, that is nothing but what beta? Shearing. Shearing are also called as of your rigidity moduli or modulus. Shearing modulus are also known as rigidity modulus. कोई फॉर्मूला बताएगा इसका? सेम प्रीवियस सर का ही. Shearing modulus is equals to, क्या लिखोगे? shearing stress divided by shearing strain. ठीक ना. रिजिडिटी मॉडुलस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? नीटा से, ईटा से इज रिप्रेजेंटेड बाय नीटा. दैट इज इक्वल टू shearing stress मतलब कितना? टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय योर x by your L. यानी that will be equal to your tangential force divided by your area into this will be equal to your 5. क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, अगर एक सॉलिड क्यूब है इस तरह से, अगर इस पे हम लोग कोई फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स क्या होता है बेटा? टेंजेंशियल फोर्स. तो ये पॉइंट यहाँ पर चले जाएगा और ये पॉइंट यहाँ पर चले जाएगा, तो देयर इज अ चेंज इन द शेप ऑफ दिस वन लाइक दिस. तो ये इसका एक्सटेंशन हो गया x, ये हो गया इसका एक्सटेंशन x, और ये हो गया L, और ये हो गया चेंज इन डायमेंशन 5. So tan phi is equals to how much for me? X by L. As phi value is very small, so phi is equals to x by L. तो x by L को हम लोग phi लिख रहे हैं, और ये जो फोर्स लग रहा है ना, कभी भी टेंजेंशियल फोर्स लेंगे हम लोग, so it is ft ले रहा हूँ. So ft is nothing but for me what बेटा? ft is your tangential force. ठीक है. चलो यहाँ पर एक पॉइंट लिखना था, भूल गया मैंने. एक वर्ड डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पर, कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी रिप्रेजेंटेड लेटर C. रेसिप्रोकल ऑफ योर बल्क मॉडुलस. रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस. बल्क मॉड्यूलस is called compressibility. Is called what beta? Compressibility. And C is equals to 1 by K. Isn't it? C is equals to 1 by K, or 1 by your bulk modulus. So this is your one important formula you need to remember. ठीक है. यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, I'll write here one point here with another pen. Bulk modulus of your solid
is greater than bulk modulus of your liquid, that is greater than the bulk modulus of your gas. Whereas compressibility of your gas is lesser than the compressibility of your liquid, that is lesser than the compressibility of your gas. इतना तक याद रख लो आप लोग, that's more than enough for your exam. Compressibility of the solid will be greater than your compressibility of your liquid, and that is greater than your gas. Whereas your compressibility of a gas is lesser than the compressibility of a liquid is lesser than the compressibility of a gas. Bulk modulus of solid is greater than the bulk modulus of a liquid is greater than the bulk modulus of a gas. Whereas compressibility will be for gas के लिए कम होगा, liquid के लिए उससे भी कम होगा, और gas का loss में जो हो जाएगा basically first वाला solid है, not gas. First वाला क्या है यहाँ पर? Solid. Solid compressibility of the solid is lesser than the compressibility of the liquid, and that is lesser than your compressibility of your gas. So what is the compressibility, beta? Reciprocal of your bulk modulus is called as compressibility. So C is equals to 1 by K लिखो or 1 by bulk modulus लिखो, one in the same. ठीक है? So we got two types of your modulus, beta, bulk modulus and shearing modulus. What do you mean by shearing modulus, beta? Shearing modulus is nothing but your shearing stress divided by shearing strain. Shearing stress is nothing but tangential force divided by area. Shearing strain is nothing but x by your L. That is change in dimension by original dimension. So tangential force divided by area into your phi. X by L is represented by your shearing strain, isn't it? So that is the basic things. These are the three types of the modulus you need to remember. What is Young's modulus? Next one is bulk modulus, and third one is about your rigidity modulus. यहाँ तक clear है सभी को? Is that clear? Next one, and very important, beta, Poisson's ratio. Poisson, name of the scientist, beta. Poisson's ratio. Poisson's ratio represented by letter sigma. ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो. मान के चलो मेरे पास एक वायर है, सिलेंड्रिकल वायर ऐसा कुछ, ठीक है, एंड इट इज बीन फिक्स्ड हियर. यहाँ पर इसको मैंने फिक्स करा हुआ ऐसा कुछ, ठीक है. ये इसका ओरिजिनल लेंथ है, वायर सिलेंड्रिकल शेप में. दिस इज योर एल. ओके, अब मैंने इसको खींचा विद सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स. तो मैंने इसको जैसे ही खींचा, देयर विल बी चेंज इन द डायमेंशन ना बेटा. तभी क्या हो जाएगा, वायर ऐसा कुछ बन जाएगा. ठीक है, तो यहां से यहां तक देयर इज अ चेंज इन योर रेडियस. रेडियस क्या हो गया, इसका कम हो गया, माइनस ऑफ डेल्टा आर लिख रहा हूं. और लेंथ क्या हो गया, यहां से यहां तक बढ़ गया. दिस इज योर एक्सटेंशन, दैट इज नथिंग बट डेल्टा एल. और यहां पर अपना फोर्स था, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर कैपिटल एफ. ठीक है ना. इसका रेडियस भी कम हो गया, देयर इज अ चेंज इन द रेडियस एंड देयर इज चेंज इन द लेंथ. लेंथ बढ़ गया, रेडियस और डायमीटर क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा बेटा? See, when a wire is subjected to deforming force within elastic limit, then lateral contraction of your strain is directly proportional to your longitudinal elongation of your wire. और strain बोल सकते. तो इसका diameter कम हुआ और length इसका increase हुआ कि नहीं हुआ? When a very thick wire is being applied a certain amount of force and pulled in the downward direction, तो उसका diameter या radius कम हुआ and length has been increased in that one. So there is a change in dimensions both in the diameter and the length. So lateral contraction, ये important है बेटा. Lateral contraction in your strain is directly proportional to longitudinal elongation in your strain. यानी longitudinal elongation in the strain मतलब length, lateral contraction मतलब radius या diameter.
तो ये कम हो रहा है तो मैं माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर। स्ट्रेन मतलब क्या, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ is proportional to your change in length divided by original length. So change in radius by original radius is directly proportional to change in length by original length. यहाँ माइनस साइन क्यों आया बेटा? क्योंकि रेडियस डिक्रीज हो रहा है, लेंथ इज इंक्रीजिंग, तो उसका पॉजिटिव टर्म ही रहेगा। तो मैं इसको अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल रहा हूँ यहाँ पर, तो माइनस ऑफ डेल्टा आर बाई योर आर इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट नोन एज सिग्मा इनटू योर डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। ये सिग्मा को अपन क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशियो, दैट इज नोन एज ऑफ योर पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला क्या बना बेटा, देखो जल्दी से, सिग्मा इज इक्वल्स टू, बाहर निकालेंगे तो माइनस ऑफ डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय योर एल। तो ये हो गया अपना पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला। मतलब सिग्मा कैन बी रिटन एज ऑफ योर lateral contraction in your strain divided by longitudinal elongation in your strain. Clear beta? Sigma is equals to minus of delta r divided by delta l divided by your l. Done बेटा? एक मिनट। क्लियर है बेटा? सिग्मा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा आर बाय आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल, या उसको हम लोग कैसा बोलते हैं, सिग्मा इज इक्वल्स टू lateral contraction in your strain divided by longitudinal elongation in your strain. फॉर्मूला समझ में आया सभी को पॉइजन्स रेशियो का? पॉइजन्स रेशियो इज नथिंग बट व्हाट, क्या बोल रहा है साइंटिस्ट ने, क्या बोला, whenever a wire is being subjected to a deforming force within the elastic limit, whenever a wire is subjected to a deforming force within your elastic limit, then lateral contraction in your strain is directly proportional to your longitudinal elongation of your strain. यानी माइनस ऑफ dr by your r is directly proportional to dl by your l. माइनस साइन क्यों? क्योंकि इसका रेडियस हो या डायमीटर हो डिक्रीज हो रहा है, लेंथ उसका इंक्रीज हो रहा है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल रहे हैं तो वी आर गेटिंग ए सिग्मा, दैट सिग्मा इज नोन एज ऑफ योर पॉइजन्स रेशियो। सो सिग्मा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा आर बाय आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय योर एल। क्लियर है बेटा सभी को यहां तक? चलो, theoretical values of sigma is between minus 1/2 to your plus 1/2, और इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो है ना, इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज इज बिटवीन 0 to 0.5। ठीक है, theoretical value of the sigma is between minus of to plus of, and experimental value is between from 0 to your 0.5. क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला क्लियर है सभी को? खाली फॉर्मूला याद रखना है, सिग्मा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा आर बाय आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा आर बाय आर की जगह हम लोग डेल्टा डी भी लिख सकते हैं बेटा। डेल्टा आर कैन ऑल्सो बी टेकन एज डेल्टा डी, रेडियस हो या डायमीटर हो, वन एंड द सेम होगा। डेल्टा टी मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायमीटर। डेल्टा आर मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेडियस ऑफ योर वायर। चाहे रेडियस में लिखो, डायमीटर में लिखो, वन एंड द सेम आंसर रहेगा। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ, यू विल गेट ए क्लैरिटी देखो इसके अंदर। फाइंड द फ्रैक्शनल चेंजेस, find the fractional change in volume of a wire, in volume of wire
when stretched by deforming force. When stretched by deforming force, sigma is your Poisson's ratio. Sigma is your Poisson's ratio. Okay, find the fractional change in the volume of the wire. मान के चलो मेरे पास एक वायर है ऐसा कुछ, ठीक है, जिसका लेंथ L है और इसका रेडियस यहां से यहां तक जो है ना R है और इसका ये डायमेंशंस. तो वॉल्यूम ऑफ द वायर कैसे लिखोगे बेटा? वॉल्यूम ऑफ द वायर इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ. एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर इनटू L लिख सकता हूं. नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या बनेगा बेटा? ये दिस विल बिकम फॉर मी लॉग ऑफ योर V, log of your V is equals to log of your pi plus 2 times of your log of your R plus log of your L, isn't it? log of V मतलब क्या बेटा? डेल्टा V by V. डेल्टा V by V is equals to pi कांस्टेंट है तो इसका 0 बन जाएगा. दिस इज 2. log of R मतलब कितना बेटा? डेल्टा R by your R plus this one is delta L divided by your L, isn't it? But we know that sigma is equals to minus of delta R by R divided by delta L divided by L. तो मैं क्या यहाँ पर delta R by R को बाहर निकालूं तो minus of, therefore minus of delta R by your R will be equal to sigma into delta L by L. So therefore I can write here delta V by your V is equals to, ये ऊपर वाले टर्म में डाल रहा हूँ मैं, इसको लेके जाके मैं यहाँ पर कहीं डाल दे रहा हूँ. So delta V by V is equals to your, this one is 2 times of your minus of delta R मतलब minus of sigma into delta L by your L plus of your delta L by your L. तो ये बना मेरे पास delta V by your V is equals to minus of 2 times of sigma into delta L by L plus of your delta L by your L. delta L by L को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो this can be written as of your delta V by V is equals to your delta L by L को अगर मैंने कॉमन ले लिया -2 प्लस सिग्मा हो जाएगा. तो इसको मैं अगर रिवर्स करके लिख दूं तो 1 minus 2 times of your sigma. So delta V by V is equals to your delta L by L into your 1 minus 2 times of your sigma will represents me the fractional change. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Fractional change. Fractional change in the wire in terms of अगर सिग्मा निकालना है तो फॉर्मूला क्या है बेटा अपने पास? डेल्टा V by V is equals to your delta L by L into your 1 minus of your 2 times of your sigma. आई बात समझ में सभी को? अगर फ्रैक्शनल चेंज नहीं है मान के चलो, if delta V by V is equals to 0 then सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा वैल्यू विल बी पूरा 0 हो जाएगा. 1 is equals to 2 sigma, sigma is equals to 1 by 2, यानी that will be equal to your 0.5. that means it is incompressible. अगर सिग्मा की वैल्यू 1 by 0.5 आ रही है that will be a completely incompressible. एक बार देख लो जल्दी से, मैंने क्या बोला? find the fractional change in the volume. Find the fractional change in the volume of a wire when it is stretched by a deforming force. मैंने इस पे एक फोर्स लगाया यहाँ पर, इसके वजह से इसका चेंज इन लेंथ हो रहा है, रेडियस भी चेंज हो रहा है. इन टर्म्स ऑफ सिग्मा लिखना है. So whenever I am applying some force on a cylindrical wire, volume of the wire will be equal to how much? Area into length. Area is cylindrical shape में होता है, pi r square into your L. Taking the log on both the sides, V के लिए log V is equals to log pi plus 2 times of log of R plus log of your L. ये आपको एरर्स में भी आता है बेसिकली. सो log V मतलब क्या लिखोगे बेटा? आप ये फॉर्मूला याद है ना आप लोग को? इंटीग्रल ऑफ योर डेल्टा V by V is equals to log of your x, isn't it? 1 by x into your dx is nothing but for me what? Log x. So log V मतलब क्या? डेल्टा V by V. log pi मतलब कांस्टेंट है 0. 2 log R मतलब डेल्टा R by R plus डेल्टा L by L. डेल्टा R by R can write in terms of sigma बेटा. As we know that sigma is equals to minus of delta R by R divided by delta L by L. तो माइनस ऑफ डेल्टा आर बाई आर इज हाउ मच फॉर मी? सिग्मा इनटू डेल्टा एल बाई एल. ये वैल्यू लेके जाकर ऊपर की इक्वेशन में डालो. वी आर गेटिंग डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 2 इनटू माइनस ऑफ सिग्मा इनटू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा एल बाई एल. सो इसको सिंपलीफाई किया मैंने तो आई एम गेटिंग द आंसर एज फ्रैक्शनल चेंज इन द
वॉल्यूम ऑफ द वायर, ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा। नहीं सर मैं डिराइव करूंगा एग्जामिनेशन हॉल में, मतलब इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन आता है जो अपने को टाइम खा जाएगा, तो इसके लिए ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट अगर हम लोग को फॉर्मूला याद है 102 बार प्रैक्टिस कर लेके तो सिग्मा की वैल्यू दे दिया था, डायरेक्टली आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर है बेटा? No doubt. So what is the Poisson's ratio, beta? Whenever a wire is being subjected to a deforming force within the elastic limit, lateral contraction in the strain is directly proportional to the longitudinal elongation in the strain. मान के चलो रबर है, इरेजर है, अगर उसको हम लोग खींचेंगे तो उसका डायमीटर हो या रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, whereas the length of that one will be increasing. The change in the radius and change in the length को हम लोग क्या बोलते हैं, a constant मान के चल रहे हैं, that constant is known as Poisson's ratio. So whenever a wire is being subjected to a deforming force within the elastic limit, then lateral contraction strain is directly proportional to longitudinal elongation of your strain. Yani minus of delta R by R is proportional to delta L by L. Removing the proportionality constant, we are getting some constant known as sigma. The sigma is known as Poisson's ratio. So sigma is equals to minus of delta R by R divided by delta L by L. So sigma is equals to formula क्या है बेटा Poisson's ratio का, lateral contraction in the strain divided by longitudinal elongation of your strain. कभी कभी प्रॉब्लम में डेल्टा आर की जगह हम लोग डायमीटर भी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द डायमीटर आल्सो. So theoretical value of the sigma lies between -1/2 to +1/2 and experimental value lies between 0 to your 0.5. क्लियर है बेटा सभी को? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिख लूंगा बेटा, series and parallel combination of wires. स्कूल में पढ़े थे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा. सीरीज में क्या सेम रहता है बेटा रेजिस्टर्स में, कोई याद है किसी को, बोलो. 10th क्लास में पढ़े थे आप लोग. इन द सीरीज कॉम्बिनेशन क्या सेम रहेगा? करंट है कि नहीं, याद है? If there are two resistors like this is resistor R1, this is resistor R2, यहाँ पर हम लोग कोई पोटेंशियल से कनेक्ट करे हुए रहते हैं, so there is a flow of a current यहाँ पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल आ जाएगा V1, यहाँ पर पोटेंशियल आ जाएगा V2, बट करंट विल बी सेम. इसमें जितना करंट जाएगा इसमें भी उतना ही करंट जाएगा. Whereas in the parallel combination, when two wires are in your parallel combination like this, connected to an external potential of your wire, positive and negative, so there is a division of a current. ये मान के चलो R1 है, ये मान के चलो R2 है, so this will become for me I1 and this will become for me I2. ठीक है? So in the parallel combination potential will be same. यहाँ पर जितना potential होगा यहाँ पर भी उतना ही potential होगा. याद है किसी को? भूल गए?
क्लियर है बेटा? सीरीज में क्या सेम रहेगा बेटा? इन द सीरीज करंट विल बी सेम, इन पैरेलल पोटेंशियल विल बी द सेम। याद है स्कूल में पढ़े थे आप लोग? उसी तरह से यहाँ पर अभी हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स बात कर रहे हैं बेटा। पहला वाला देखो, आई एम टेकिंग 2 कॉलम्स राइट नाउ हियर। So first one is your series combination of your wire. ओके तो देखो यहाँ पर मेरे पास ऐसा कुछ वायर है, यहां से यहां तक एक वायर, फिर यहां से यहां तक और एक वायर, and this is connected to some load of weight capital M. ठीक है, this is made up of length L1, okay, and this is made up of your length L2. This is made up of Young's modulus Y1, this is made up of Young's modulus Y2. Area of cross section A1, area of cross section A2. okay, दोनों का सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटा। एक वायर है, यहाँ पर एक वायर है ऐसा, ठीक है। So force acting on this wire will be equal to how much beta? We are applying a force on this one. So this F will be equal to your M into G. Okay, when I'm applying this much amount of your force, the thing what you need to remember in this one is, first one, force will be same. F will be equal to your F1 will be equal to your F2. दोनों के ऊपर force एक ही weight की वजह से लग रहा है, that is M into G. लेकिन elongation in the first wire E1 होगा और elongation in the wire second wire होगा E2. तो लेकिन elongation हो गया यहाँ पर E1 plus E2, क्योंकि दोनों different material है तो दोनों का different elongation रहेगा। E is equals to your E1 plus of your E2 होगा, E1 is equals to your E2, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं अगर elongation की बात करूँ तो E is equals to E1 plus E2। elongation का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Y is equals to F into your L divided by A into your E। तो E का फॉर्मूला क्या होगा? E is equals to F into L divided by Y into your A। तो यहाँ पर हो गया फोर्स F, टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज L1 plus L2 divided by your area of cross section is A into your Young's modulus of that one is YS, यानी that is equals to your F into इसका लेंथ हो गया L1 divided by area of cross section मान के चल रहा हूँ A into your Y1 प्लस इसका भी हो गया F into your L2 divided by A into your Y2। ओके, A1 and A2 आर सेम बेटा। A1 is equals to मान के चल रहा हूँ ये और A2 भी मान के चल रहा हूँ ये, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज से फॉर एग्जांपल ऑफ योर से। तो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो जाएंगे बेटा? एरिया 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 F F और F विल गेट कैंसिल, यानी L1 प्लस ऑफ योर L2 डिवाइडेड बाय Young's modulus ऑफ योर सीरीज कॉम्बिनेशन will be equal to your L1 divided by Y1 plus of your L2 divided by your Y2, यानी Young's modulus of the steel wire will be equal to your L1 plus of your L2 into ये बन जाएगा मुझे Y1 into Y2 divided by your Y1 into your L2 plus of your Y2 into your L1। कैल्शियम लिखा है मैंने बस, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। फिर से एक बार देखो, whenever two wires are connected in series combination, उसपे forces सेम रहेंगे और उसके ऊपर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम रहेंगे। A is equals to A1 is equals to your A2, ठीक है। और नेट एलोंगेशन कितना होगा बेटा? दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से, तो एलोंगेशन इन द फर्स्ट वायर इज E1 एंड एलोंगेशन इन द सेकंड वायर इज योर E2। तो दोनों पे फोर्स एक ही लग रहा है, तो नेट एलोंगेशन इज E1 plus E2 बेटा। तो E is equals to your L1 plus L2, क्योंकि तो टोटल वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? L1 plus L2 divided by A into Young's modulus of the wire effective, that is series combination। E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? F into L1 divided by A into Y1 plus F into L2 divided by Y2। अब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सेम है, कैंसिल कर दिया मैंने, सिंपलीफाई किया, तो आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ द Young's modulus ऑफ द स्टील वायर विल बी इक्वल टू योर L1 plus of your L2 into Y1 Y2 divided by Y1 L2 plus of your Y2 into your L1। डन। इसके अंदर ही देख लीजिए, अगर लेंथ दोनों के सेम लेता मैं इनिशियली, अगर दोनों में एलोंगेशन सेम है यानी एक ही मेटल का बना हो, इफ L1 is equals to your L2 then Young's modulus of your wire in the series combination कितना बनेगा? L1 plus L2 मतलब ये बन जाएगा 2 times, isn't it? So it is your 2 times of your L into your Y1 into Y2
divided by, this is y1 into your L plus y2 into your L. Everywhere L और L cancel हो जाता. Y in your series combination कितना बन के आता बेटा? Y in your Young's modulus of the Y in the series combination is 2 times of your y1 y2 divided by y1 plus y2 बन गया, isn't it? आई बात समझ में? 2 times of y1 y2 by y1 plus y2. So I can say this is your harmonic mean of your y1 and y2. Is it clear beta? Is it clear? Yani this is something like this. 2 times of your y in your series will be equal to 1 by y1 plus 1 by y2. Isn't it? Yani effective spring constant जैसे लिखते हैं अपन, 1 by your k is equals to your 1 by k1 plus 1 by k2 in case of springs. In case of springs, when two wires are connected in series combination, 1 by k effective is equals to 1 by k1 plus 1 by k2. बात समझ में आया सभी को? If two wires are being connected in the series combination, Young's modulus of that series combination is calculated with the formula L1 plus L2 into y1 y2 divided by y1 L2 plus y2 into your L1. Clear है? उसी तरह से अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेता हूँ, क्या होगा एक बार बताओ जल्दी से. पैरेलल कॉम्बिनेशन, if two wires are taken in the parallel combination, ऐसा कुछ बन रहा है जैसे यहाँ पर एक वायर है और यहाँ पर एक वायर है. These two are connected like this, and this one is attached to a weight of the block of mass capital F. इसका लेंथ सेम है, इसका भी लेंथ सेम है. This is Young's modulus y1, this is your Young's modulus y2, isn't it? लेकिन वाइड्स डिफरेंस रहने की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स अलग लग रहा है बेटा. इस पे एक फोर्स लगेगा यहाँ पर F1 और इसमें अलग फोर्स लगेगा, दैट इज योर F2. ठीक है? सो इसमें क्या कॉमन रहेगा बेटा? elongation will be the same for this one. I can write here first point. E will be equal to your E1 is equals to E2. Elongation of the first wire will be equal to elongation of the second wire. Lekin force will be different. So F will be equal to your F1 plus of your F2. ठीक है? Length of the wires will be equal to your how much for me बेटा? Same. सबका दोनों का length कितना हो जाएगा? Same हो जाएगा. यानी L is equals to your L1 is equals to L2. ये मान के चलो L1 है, ये मान के चलो L2 है. तो दोनों का length same हो जाएगा. That is equals to your L1 and L2 will be equal to your same. ठीक है? तो net elongation force कितना है बेटा? F is equals to your F1 plus F2. So F is equals to your F1 plus of your F2. So F कैसे लिखोगे बेटा? फॉर्मूला क्या है अपने पास? Y is equals to F into L divided by A into E. F कैसे लिखोगे? F is equals to Y A E divided by your L. यानी F का वैल्यू कितना हो जाएगा? Y in your parallel into your area of cross section A1 plus of your A2 into elongation E divided by the length L. That is equals to your Y1 A1 into E divided by L plus ये हो गया Y2 A2 into elongation E divided by L. दोनों में elongation will be remaining for me the same. तो क्या क्या कट जाएगा देखो बेटा इसमें से L और L कट गया. So if I am simplifying this one, I will be getting right now Y in your parallel into your A1 plus of your A2. Elongation भी same है, ये elongation भी cancel हो गया. So it is Y1 A1 plus of your Y2 A2. यानी Young's modulus in the parallel combination का फॉर्मूला कितना बन गया? Y in parallel will become for me Y1 A1 plus of your Y2 A2 divided by your A1 plus A2. ये अपना actual फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है. If two wires are connected in your parallel combination, Young's modulus of the combination of the wire is being given by the formula Y1 A1 plus Y2 A2 divided by A1 plus of your A2. ठीक है? अगर दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है बेटा, इफ A1 is equals to A2 is equals to A, कितना आएगा आंसर कोई बोल सकता है? Y in parallel will become equal to how much? Y1 plus Y2 divided by 2 हो जाएगा. So this will be the parallel combination. ठीक है? So this is coming in what mean beta? Arithmetic mean of your Y1 and Y2. Arithmetic mean of your Y1 and Y2. In case of springs beta, in case of springs आपने वर्क और एनर्जी में पढ़ा होगा. In case of springs, हाँ बेटा
सर एक्चुअली में यहाँ पे पावर लॉस हो गया, पावर गया है, तो इसकी वजह से क्या है, बच्चे प्रोजेक्टर पे नहीं देख सकते सर। एक 5 मिनट्स हो गया। अरे रे रे, ठीक है, कल कंटिन्यू कर लेता हूँ फिर मैंने, हाँ ठीक है सर। कल कंटिन्यू कर लेता हूँ। हाँ ठीक।